मेरे सबसे बड़े वाले भाई हैं. He moved here back in 1996 के around. He came as a student और हमेशा से उनको कुकिंग का शौक था. 2001 में उन्होंने जो है ना पहला अपना रेस्टोरेंट यहाँ पे स्टार्ट किया. Everyone on earth feels passionate about food because it's the common thread that connects us to our culture. Lal Qila is located at Darling Harbour, adjacent to the city centre of Sydney, and is considered the most visited spot by Pakistani and Indian immigrants who live far, far away from their homeland. बेसिकली कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी है यहाँ पे. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी है. पाकिस्तानी इंडियन लोग भी पाकिस्तानी खाना बहुत ये जो स्पेशली बॉर्डर के करीब वाली जो अवाम है, स्पेशली पंजाबी जो हैं, उनको बहुत पसंद है पाकिस्तानी खाना. हमारे पास बहुत पंजाबी लोग बहुत काफ़ी आते हैं. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਜੌਬਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣ ਆਈਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. Inspired by the Mughal Empire theme, the restaurant is known for its unique style of hospitality and a wide range of Pakistani and South Asian cuisines. Apart from enjoying the taste of mouth-watering traditional dishes, the remarkable ambience put a magical spell on the visitor as they experience returning in time and reliving the cherishable moments they spend with the families. During COVID, I lost my mother. Sad bit about that was that I couldn't go back and I couldn't attend the funeral. So whenever I miss her cooking, whenever I miss food from back home, I usually come around here, have lunch, come over here with mates to have dinner, and it actually does remind me of how my mother used to cook back home. Serving the same fancy ethnic food and matching quality through the right choice in the palette of spices can be challenging, especially when people are already familiar with the taste. आप हमारे स्पाइस देख रहे हैं, हम लाइक ग्रेवी हमारी एक टाइप की नहीं होती. इवन लाइक हमारे पास एक ही ऑर्डर आता है तो हम उसको बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं. ये नहीं होता कि हमने इकट्ठा कुक किया हुआ तो वहाँ से आपको सर्व कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है. Most of the traditional dishes are often reserved for special occasions, whether it's Eid, Ramadan, wedding ceremonies, or Diwali. South Asians love visiting eateries that serve traditional food with an explosion of flavors and look for the atmosphere that reminds them of their culture. ना जी, हमारा जो फूड है ना वो सारा ट्रेडिशनल फूड है, हमारा वेस्टर्न फूड नहीं है. लाइक कंप्लीटली जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, पाकिस्तानी फूड है, वो है. गोट की कढ़ाई देते हैं, गोट की बिरयानी देते हैं, चिकन बिरयानी देते हैं, बारबेक्यू बिरयानी है हमारी. और उसके बाद ये हमारी जो हांडी है वो मोस्ट फेमस है, चाहे वो चिकन की है, चाहे वो लैम की है, चाहे वो पनीर की है. Ramadan is like one of the busiest month of the year हमारे लिए. We have 2 Eids back home, and different foods are related to both events. And if you miss out on those foods, then you basically miss out on those events and holidays. Eateries like Lal Qila have been playing a vital role in carrying a legacy of ancestral food culture. स्पाइसेस हम जो है ना वो हमारा एक ही सप्लायर है तकरीबन पिछले 14-15 साल से. जो क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मेयार पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते. आप देख लें कि जितना हम लाइक गार्निश में हम जिंजर, कोरिएंडर, ग्रीन चिली, ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते बिल्कुल भी. They've got a really good chef here, I'm sure, and it's doubly amazing because it's exactly how my mother used to cook. The right amount of spices, the right amount of time that it's left on the stove. मसालों से कभी भी खाने नहीं बनते. अगर मसालों से खाने बनते हो तो फिर हर कोई बना ले. खाना बनाने की एक टाइमिंग है, इसको कुक करना, ना इसको ज़्यादा कुक करना, ना इसको जो है ना लेस कुक करना है. इसकी टाइमिंग सबसे इम्पोर्टेंट है. Executing traditional cooking styles to inspire people at the global level and winning people's heart by spreading a taste of joy, serving delicious home-cooked recipes, and making the world aware through the aroma of their food values. हमारी लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल. It's like heart of the city, Darling Harbour. टूरिस्ट और
उसके बाद फिर ऑफिसेज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो उसका फ़ायदा ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी तो आती ही आती है, लेकिन लंच के टाइम पे जैसे हो गया ऑफिसेज में लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। I definitely will. I think I've got them a lot of business in the last 3 years. I've got a lot of friends that have actually showed up here and had food because I recommended this place. It's fresh, it's amazing, it's clean, it's a really good environment, and it's a vibe. Nearly more than 20 plus Asian restaurants are successfully serving a diversity of cultural food in Australia. That's why the immigrants in Australia are not just adopting both Indian and Pakistani food, but it has captured the eye of locals too. Globally, the rich traditional food culture share different perspectives. For example, some may remember it as a language of love, and some consider it as a medium of celebration that brings people together. The food chain like Lal Qila are setting a great example to empower the idea of food becoming global and sharing mouth-watering recipes that contributes to bringing forward distinctive style of Pakistani cultural food.